Welcome back to another video by 12th Istik. In this video, we will be discussing about the subject Secretarial Practice, Standard 11, Chapter number 2, which is Joint Stock Company on page number 16 of your Secretarial Practice textbook. So guys, let us begin. Joint Stock Company. In this chapter, you have evolution of new business organization, which consists of sole trading concern, joint Hindu family business, partnership firm, limited liability partnership, cooperative society, joint stock company. Also, we have meaning, definition, and features of joint stock company, the types of companies, and the difference between. So, in this video, let us begin with the introduction and evolution of business organization. Introduction. Industrial Revolution took place in England in 1760. Before Industrial Revolution, production was done manually using local resources. So, Industrial Revolution जो है, जो new industries आए, that took place in England, in the country England. First Industrial Revolution came up in the year 1760. So before Industrial Revolutions, जो कुछ भी काम का चलता था वो manually, मतलब totally depended on man. So manually all the resources and all the equipments and productions used to work. Limited capital was needed and often production was done at home. So अगर ये जो कुछ भी मशीनरीज वहाँ उस टाइम पे यूज नहीं हुआ करते थे, दैट इज इट वाज कम्प्लीटली ऑफ अ मैन मेड, दैट इज आदमी लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज में जाके काम करते थे और उसका जो प्रोडक्शन था वो लोग घर पे ही बनाते थे. तो कैपिटल, दैट इज द मनी दैट वाज रिक्वायर्ड, जो पैसा लगता था वो बहुत ही कम लगता था बिकॉज वो टाइम पे मशीन्स नहीं थे. The Industrial Revolution brought about radical change in the field of industry and commerce. So अभी जैसे जैसे industrial revolutions आ गए in England or in any other countries, तभी it took a very rapid change. तभी बहुत ही अलग scenario हो गया था. Production was done now on a large scale with the help of machines, and that too in anticipation of demands. सो इंडस्ट्रीज आने के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस होने के बाद जो कुछ भी प्रोडक्शंस होता था वो कंप्लीटली मशीन्स पर ही होता था. लोकल मार्केट टर्न्ड इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स. तो जहाँ पे एक छोटा सा लोकल मार्केट था वो नेशनल में बदल गया, वो स्टेट में बदल गया और वो एकदम बड़ा ही इंटरनेशनल हो गया मार्केट्स. रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर commercial activities were the major effect of industrial revolution. So transport है, commercial activities है, commerce के और कुछ भी activities है, this had played a very important role in industrial revolution. To meet the new challenges of business, joint stock company forms of business organization evolved. So और एक जो नया बदलाव आया है, that is about the joint stock company. So this company business also was a new after the Industrial Revolution. Evolution of business organization. In view of above given developments, the sole trading concern, joint Hindu family business, and partnership firm proved inadequate to face the challenges posed by changing needs of commerce and industry. So और भी जो कुछ भी बिजनेस के रिलेटेड जो ट्रेडिंग कंसर्न्स है, दैट इज द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सो ये सब को बहुत ही चैलेंजेस फेस करने पड़े. बट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वन कंपनी विच हैड फॉर्म्ड अ वेरी न्यू बिजनेस. सो thus a new form of business organization, namely the joint stock company, emerged. Different types of business organization are discussed below. Forms of business organization. First, we have sole trading concern. Second, joint Hindu family business. The third one is
partnership firm. The fourth one is limited liability partnership. The fifth one is cooperative society. And the last, sixth one is joint stock company. So now let us have a look on each of the forms of business organization in short. Please turn to page number 17. A, that is the first one, is the sole trading concern. A sole trading concern is a form of business organization. So एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है. दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन. सो ये जो बिजनेस है उसका जो मालक है ही इज ओनली वन पर्सन. सो उसका मालक भी एक है, वो उसका खुद का बिजनेस भी संभालता है और कंट्रोल करता है. That is the reason why the word soul, S-O-L-E, soul meaning one person. So it is called as one man business. So this sole trading concern, इसका दूसरा भी word है one man business. That is एक ही आदमी है जो उसका business का वो बॉस भी है, वो संभालता भी है, वो मैनेज भी करता है और उसके पास वो कंट्रोल भी होता है उसके खुद का के बिजनेस का. A person who conducts the business is called as a sole trader. So एक व्यक्ति जो उसका जो बिजनेस है वो देखती है या देखता है, so that person, वो व्यक्ति को सोल ट्रेडर ऐसे कहा जाता है. Features: there is no separate law or act governing sole trading concern, but it has to follow all the laws of land. सो ऐसा एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बस एक बेसिक से रूल्स है दैट द सोल ट्रेडर हैज टू फॉलो. द सेकंड वन इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर. सो इफ अ पर्सन वांट्स टू ओपन अ सोल ट्रेडिंग बिजनेस तो उसका जो ओनर है वो एक ही होगा. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल. सो जो वो मनी, जो वो पैसा उसके बिजनेस को लगाएगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि एक ही आदमी है तो उसका ही पैसा वो बिजनेस के लिए लगेगा. दैट इज द रीजन वाई जो वो कैपिटल, जो वो मनी उसके बिजनेस के लिए देगा, इट विल बी ऑफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट. The fourth one is there is no division of profit or loss as there is a single owner. सो सोल ट्रेडर मतलब एक ही व्यक्ति. तो अगर एक ही व्यक्ति है वो बिजनेस में जो संभालता है, वो जो मैनेज करता है, जो कंट्रोल करता है, तो जो उसको प्रॉफिट होता है या फिर जो उसको लॉस होता है वो उसका खुद का ही होगा, उसके अलावा दूसरे पार्टनर्स का नहीं होगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज अ वन मैन बिजनेस. The fifth one is all decisions of business are taken by sole trader. So sole trading concern में एक ही अगर आदमी है तो जो कुछ भी बिजनेस का डिसीजंस लेना होता है that one person will only take. The sixth one is the proprietor, sole trader can ensure maximum business secrecy. So उसके बिजनेस के रिलेटेड जो कुछ भी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है, जो कुछ भी सीक्रेट मैटर्स है, अगर उसको किसी को भी नहीं बताना है तो दैट इज ओके. Why? Because there is only one person who has the control of all the business. The seventh one is the liability of sole trader is unlimited. So जो उसका liability है वो unlimited है, कुछ limited नहीं है. The eighth one is this business does not enjoy a separate legal status. So ये business that is of a sole trading business, it does not enjoy उसका separate legal status, ऐसा कुछ नहीं है. And the last, ninth one is sole trading concern is not suitable for large scale business operation. So as this sole trading business is concerned with only one person, तो वो big companies के लिए it is not suitable. क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो उसका वो जो मनी इन्वेस्ट करेगा वो भी इट विल बी इन अ स्मॉल अमाउंट. तो ये जो पर्सन है वो स्मॉल कंपनीज ओपन कर सकता है, बट very big and very large company he cannot open. So this is with the first, that is A, sole trading concern. Now let us go on to the B one, that is joint Hindu family business. When a Hindu undivided family conducts business inherited by it as per the Hindu law, it is called as a joint Hindu family business.
सो दिस मीन्स दैट जब एक हिंदू परिवार, जब एक हिंदू फैमिलीज, दैट इज a joint family or a group of family is conducting as per the Hindu law के बारे में जो कुछ भी है, so when the Hindu families are conducting business following the Hindu law, this process is called as a joint Hindu family business. It exists only in India. तो ये जो फैमिली का बिजनेस है ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, ये बिजनेस इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है. It is governed by Hindu Succession Act 1956. So this comes under Hindu Succession Act 1956. ये जो बिजनेस है, that is Hindu अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है, ये 1956 एक्ट के अंदर आता है. Then we have the features. The first point is membership in the joint Hindu family business is by birth only. Every child born in the family becomes a member. So suppose if one family wants to conduct a business, एक हिंदू फैमिली है और उसको बिजनेस कंडक्ट करना है, तो जो कुछ भी नए मेंबर्स उसमें बॉर्न होती है तो वो बिजनेस में एड ऑन ही हो जाती है. कोई बाहर का व्यक्ति है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में नहीं आ पाएगा. द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज द कर्ता. तो ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसका एक हेड पर्सन है. वो हेड पर्सन, वो मेन व्यक्ति को हम लोग कर्ता ऐसे करके बुलाते हैं. So for example, also in our family, how our grandparents or how our father is the main member of the family, जो decisions लेता है. So similarly, in this joint Hindu family business, the karta is the main head of the family. The third one is other members of the family are called as the co-parceners. So दूसरे जो व्यक्ति है वो family के business के, they are called as the co-parceners and the head is called as the karta. The fourth point, number of members. There is no limit on minimum and maximum number of membership. तो ये जो joint Hindu family business है, इसमें members की कोई कमी नहीं है. It is unlimited. Members can come and join, but only family members, no outsider people. The fifth one is all family members are engaged in the business. So जो कोई भी वो लोग के families में है, जॉइंट फैमिलीज में है, वो सब लोग वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वेदर दे आर वुमेन और वेदर दे आर मेन और वेदर दे आर चिल्ड्रंस, एवरीवन जॉइंस इन द बिजनेस. द सिक्स्थ वन इज द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड. तो कर्ता की जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड एंड द लायबिलिटी ऑफ को पार्सनर्स इज लिमिटेड. तो दूसरे जो मेंबर्स है दैट इज कॉल्ड एज द को पार्सनर्स, वो लोग का लायबिलिटी इज लिमिटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. The eighth one is Karta is the manager, controller and coordinator of the business. So Karta is the head of the family who takes all the decisions. कर्ता एक ऐसी व्यक्ति होती है जो सारे जो decisions है of business related वो लेता है. So that is why it is called as the Karta is the manager. वो control करता है उसके business को और वो coordinate भी करता है. Ninth, Karta being the sole decision maker can take quick decision. So as Karta is the head of the family, Karta business related के सारे decisions लेता है, वो भी तुरंत ही decisions ले लेता है. And the last, the 10th one, the profit sharing ratio keeps on changing depending upon the birth and death in the family. So जो कुछ कोई भी प्रॉफिट या जो कुछ भी प्रॉफिट ये बिजनेस को मिलता है जॉइंट हिंदू फैमिली, ये वैरी होता है, ये बहुत ही डिफरेंट या फिर कभी कभी कम प्रॉफिट मिलता है तो कभी कभी ज़्यादा मिलता है, डिपेंडिंग कि कितने लोगों का बर्थ हुआ है, कितनों का डेथ हुआ है. सो डिपेंडिंग ऑन द बर्थ एंड डेथ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, वो लोग का जो प्रॉफिट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग. देन वी हैव द C, दैट इज पार्टनरशिप फर्म. The business organization which is owned, managed and controlled by two or more person is called partnership firm. Now as the word suggests partner, partner मतलब two people or more than two people. So ये business में, partnership के business में दो व्यक्ति या फिर दो से ज़्यादा व्यक्ति होना ज़रूरी है. So those two persons or more than two persons should be the owner, manager and the controller of the business. The owners are called as the partners and the organization is called as a firm. So partnership firm, ये जो word है वो divide किया गया है.
द ओनर्स, मतलब जो वो दो ओनर्स या फिर दो से ज्यादा ओनर्स है, दे आर कॉल्ड एज द पार्टनर्स. एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो लोग का जो कंपनी है, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्म. So that is why the owners and the organization, it is called as the partners and the firm. Registration of partnership firm is compulsory in Maharashtra state. अपने स्टेट में, in the state of Maharashtra, partnership firm को register होना is very important. For example, when we buy a new house, so we register that house. So similarly, if there is a partnership firm business, then that partnership firm business का registration होना is very important. This form of organization is governed by the Indian Partnership Act 1932. So ये Indian Partnership Act 1932 के अंडर partnership firm आता है. Also then turn to the next page, that is page number 18. Features. This business is started by an agreement between two or more persons. So ये जो partnership business है, इन ये business के बीच में there should be an agreement. Partners का agreement होना is very important. Second, number of members minimum 2, maximum 50 for general business. So यहाँ पे minimum जो number है business start करने के लिए is 2. And maximum is 50 in the general अगर business है तो. The third one, the liability of partner is unlimited and is joint and several. So जो partner का liabilities है, it is unlimited. The fourth one is capital is contributed by the partners. So जो money, जो पैसा business में required है या फिर business को चाहिए और grow करने के लिए, तो ये जो कैपिटल है, ये जो मनी है, वो दोनों के बीच में दे विल कॉन्ट्रीब्यूट. if 5 lakh rupees is required for the business, then each of the partner will give 2.5 lakhs and 2.5 lakhs. तो ये division हो जाएगा of the profit. So they will contribute and they will give the money. Then the fifth point is partnership firm does not enjoy separate legal status. तो ये partnership business के लिए ऐसा separate legal status they do not enjoy. The sixth one, in partnership firm, partners cannot transfer their share without the permission of other partners. So ये partnership के firm के business में अगर एक person को उसका जो share है वो दूसरे व्यक्ति को transfer करना है, तो he will take the advice and permission of the another partner. परमिशन अगर उसने नहीं लिया तो ये शेयर्स है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है. सो वन पार्टनर शुड टेक द परमिशन ऑफ अनदर पार्टनर टू ट्रांसफर द शेयर्स. देन द सेवेंथ वन इज ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस. सो अगर दो पार्टनर्स या फिर दो से ज्यादा पार्टनर्स है तो दे आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड दे आर ऑल्सो द मैनेजर ऑफ द बिजनेस, बिकॉज whatever money they are contributing is equal. That is why they are the owners and managers of the business. The eighth point, no separation of ownership and management in partnership firm. So यहाँ पे there is no ownership of partnership also and of separation also because it is a partnership firm. Partners share profit and loss in the agreed ratio as mentioned in the partnership deed. तो जो वो लोग के एग्रीमेंट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो लॉस शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है या मेंशन किया हुआ है, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिवाइडेड और विल बी गिवन अमंग द पार्टनर्स. दैट इज वो एक पार्टनरशिप डीड में इट इज बीन स्पेसिफाइड. देन वी हैव द D1, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP. Limited liability partnership has a combination of features of both partnership and joint stock company. So ये जो limited liability partnership है, it is the combination, वो combine है of the partnership, that is one, and second is of the joint stock company. तो ये दोनों का combine is limited liability partnership. As the name suggests, partners have limited liability, which means that personal asset of the partners are not attached for paying off the debt of LLP. So ये लोग का जो liability है, the partners LLP business का जो liabilities है, it is very limited.
Nowadays, it has become very popular form of business. All limited liability partnerships are governed by the Limited Liability Partnership Act of 2008. So 2008 is the act that is related to limited liability of the Partnership Act. We have the features of limited liability partnership. The first one is the limited liability partnership is a separate legal entity, that is a body corporate. The LLP and the partners are distinct from each other. So ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो एक सेपरेट ही लीगल बॉडी है. इट इज नॉट कंबाइंड विथ एनी अदर बिजनेस फर्म. Second, number of members, minimum 2 members, maximum unlimited. So minimum members that is required for limited liability partnership is 2 and maximum is unlimited members. Third, no requirement of minimum capital contribution. So a person or a partner, they can contribute or they cannot contribute also to the limited liability partnership. So there is as such no requirement also. The fourth one is it is simple to form and easy to operate. So limited liability partnership वो एकदम आसानी से हम लोग वो कंपनी को चालू कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं. The fifth one is the liability of each partner is limited to its share as written in the agreement. So agreement के हिसाब से कितना कौन से पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा. If one partner is contributing more money, then he will get the profit or he will get the share more. So agreement में जो specify किया है वो ही वो partners को follow करना पड़ेगा. The sixth one is it has a low cost of formation. तो वो कंपनी को फॉर्म करने के लिए, बिल्ड करने के लिए कुछ प्रोसीजर है तो वो भी बहुत ही आसान है और वो प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए भी कम पैसे लगता है. सो दैट इज व्हाई इट इज अ लो कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर्स. The seventh one is there is no restriction on joining and leaving limited liability partnership except as stated in the partnership agreement. So ये जो partnership firm है that is of a limited liability partnership, the partners can come also and they can leave also. इतना strict rule नहीं है, only is they should follow the partnership agreement of LLP. And the last, eighth one is double taxation is avoided. There is no tax on share in profit. So if this LLP company is earning a profit, then they do not have to pay a huge tax. Next, we have the E1, that is cooperative society. A cooperative society is a voluntary association of person formed to achieve certain economic objective. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक बड़ी सी सोसाइटी होती है जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है टू एंड दे हैव टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड. सो कोऑपरेटिव और सोसाइटीज जो है उसका जो मेन एम होता है टू गिव सर्विसेज टू द कस्टमर्स. प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना वो लोग का एम नहीं होता है, बट लोगों को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को अच्छी तरीके का सर्विस देना, टू प्रोवाइड गुड सर्विस एंड बेटर सर्विस, दिस इज द मेन एम. द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960. सो ये एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होना जरूरी है. दैट इज अंडर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1960. Registration is compulsory. Turn to the next page, page number 19. Features. Registration is compulsory. So for a cooperative society, register होना बहुत ही ज़रूरी and compulsory है. Second, the membership of cooperative society is open to all. So कोई भी व्यक्ति, कोई भी member, they can be a member of this cooperative society. Number of members, minimum 10 members are required and maximum there is no limit. The fourth point, the liability of a member in a cooperative society is limited. तो जो members का जो liabilities है वो it is limited. The fifth point, it differs from other forms of organization as it does not aims in maximization of profit but to provide services to its members. So cooperative society का ये main aim है to provide service. Profit कमाना, पैसा कमाना is not the main aim.
The sixth one, the organization enjoys independent legal status different from its members. So ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के दो मेंबर्स है, they are independent legal status in the company. The seventh point, the management of cooperative organization is democratic in nature. So there is an equality in voting rights. They follow the principle of one member, one votes. So जब भी वो लोग का मीटिंग होता है ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट टाइम वोटिंग राइट मतलब सब मेंबर्स, सब लोग वोटिंग कर सकती है. सो वन मेंबर वन वोट मतलब एक जो व्यक्ति है वो एक बार उसका वोट देगा टू सम अनदर पर्सन. सो देर इज इक्वलिटी ऑफ वोट एज ऑल द मेंबर्स कैन वोट. That is why it is said that one member, one vote. And the eighth point is there is control and supervision by the state government on the working of cooperative organization. तो state government का ध्यान रहता है towards cooperative society. State government also controls and supervise जो कुछ भी कामकाज cooperative society कर रहे हैं उसको state government it looks after. A sole trading concern, joint Hindu family business and partnership firm could not meet the requirement of large scale business organization. So ये जो है that is sole trading concern, जो एक व्यक्ति का business होता है, joint Hindu family firm that is the business of the Hindu family, partnership firm मतलब two or more than two partners, ये जो तीन businesses है वो large scale business के लिए नहीं उपयोगी है या फिर नहीं, it is not important. But there is one company that is important and that is required for the large scale business is the joint stock company. So all of them have limited funds, no stability, unlimited liability and lack of managerial ability. So joint stock company was established. So that is the reason why large scale of business के लिए, large scale of operations के लिए joint stock company, this company has been evolved and has came into existence. So we have the fifth one that is joint stock company. A joint stock company is a more formal form of business organization. So ये joint stock company है, it is a real form of business organization. It is capable of satisfying requirement of modern industry. It is most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activity. So for large scale business activity को conduct करने के लिए, एक huge business activity को conduct करने के लिए joint stock company is very important. This form of organization started in India in 18th century. So joint stock company India में first time in the 18th century आई थी. At present in India, we come across different type of joint stock companies such as public, private, government, statutory, etc. So in India also, India में भी बहुत सारे joint stock companies है. Like we have public companies, private है, government है. So there are many of this joint stock company. So this is it for my video in secretarial practice. Stay tuned for the further discussions of the chapter. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel 12th is Thick. Soon we will be back. Stay tuned. Until then, stay safe and stay healthy. Thank you. Bye-bye.